Okay, so in the last session, we have started with the supervised machine learning, and under that we have seen regression analysis. We have seen that the supervised machine learning can be used to solve two different problems in day-to-day life. So one is classification problem, another one is regression analysis. So whenever we have discussed classification, we have said that it is all about predicting the categories or the classes, and whenever I have said regression, that means producing some value as an output. For example, predicting room temperature for tomorrow, weather forecast, stock price prediction, salary prediction, all such examples fall under regression category. And we have seen three different regression analysis techniques. One is linear regression, which is like this. So, for example, as per the salary data is concerned, on x-axis we are having the experience, and on the y-axis we have got the salary. And this is linear variation. The salary is linearly varying with respect to experience. So whatever the green dots you are seeing over here, this is the actual salary based on this experience, and this is the fitted curve, or this straight line which we have plotted as per this regression analysis. So we have established this equation, and due to linear regression we will get this line. Now this line is actually touching nearly all the points. So this is perfect example of linear regression, experience versus salary. Also we have seen this kind of regression, which is polynomial regression, where the input and output relationship is not linear, it is non-linear. So we should go with the polynomial regression. So after plotting the data, if we are getting such kind of data points which are not linear, so in that case we should go with the polynomial regression with a certain degree we can go. So if we go with second degree, we will get such kind of curve. If I increase the degree of polynomial features, then again the curveness will increase. And if the degree is equal to 1, that means it's a straight line equation. So in that case it will be a linear regression. In this lecture, we are going to understand a new type of regression called logistic regression. Sometimes this is also called as classifier. Okay, most of the time, logistic classifier, or this regression is basically used for classifying only two categories. Okay, so if you are having only two categories like 0 and 1, or true or false, yes or no, apple or no apple, cancer or no cancer detection, brain tumor or no tumor, COVID or no COVID. So, in that particular case, logistic regression is suitable. As far as the previous examples are concerned, where we have seen the data set, we're having a number of values in the output column. So it was varying continuously, and number of things we were getting in that column. So it was not a constant value. As far as the salary prediction is concerned, the salary was continuously changing, and it was not fixed values. But if your output column has got only two values, or two entities, or the two possibilities, in that case the logistic regression is the most suitable choice. So if your data set contains number of columns as input features and some column as an output, or the dependent variable and too many independent variables, it can be a single independent variable, or it may have multiple independent variables. But if your output column contains only two possibilities, so in that particular case, logistic regression is suitable. Now, if you notice this curve, this is some sort of sigmoid function, and its output is either high or low. Its output is the 1 or 0. Okay, irrespective of whatever happening on the x-axis. So based on this variation, its output will be either 1 if it is the value is greater than 0 on x-axis. In that case, its output is 1, and if the value on x-axis is less than 0, in that case its value is equal to 0. So as far as this logistic regression is concerned, its output will be only two possibilities, either 0 or 1. So this kind of regression sometimes called as binary regression, because it is going to produce only two values, 0 or 1. So if your output column contains only two values,
then in that case you can go with this kind of thing. So I will show you what kind of data we are having. So we are having this social network advertisement data. So if you can see here, this is actually the data collected from some social networking sites such as Facebook, or you may call it as Twitter or something. So for example, let's assume that this is the data which is collected from the Facebook, and this is the user id. User id is nothing but the id which is assigned to that social networking site. So we are not bothered about this id will uniquely identify that particular person. So every person will have name on social media, and its unique id is there. So this is id column, so we are not worried about this id column. Secondly, the gender information is somewhat important, male, female, and the age of that person, and the estimated salary of that particular person, and the purchase information. So basically, this data set, let me tell about something about this data set so that you will understand what kind of data set is that. Actually, there is a company who is running the advertisement on Facebook. So one company is there who manufactures some car, and they have posted their car advertisement on the social media, or let's say on Facebook. For example, right now the Tata has launched their new electrical vehicle called Tigor. Now the Tata, let's say the Tata has posted an advertisement, paid promotional advertisement on the Facebook, and now these are the users who have watched the advertisement and their gender, age. This is what we have received from the Facebook site, and we have estimated their salary like this. This is the estimated salary of that particular person, and whether this particular person is going to purchase that car or not, that we have to predict. Okay, that is the prediction. So based on this one, uh, for example, for this is the data. Let's say one company is there, let's say Tata Tigor has posted their advertisement on the Facebook, and these are the users who have seen that particular ad. And if the person's age is 19 and its estimated salary is 19,000, then that person has not purchased. So this is actual data. Actually that person hasn't purchased the car, and some people have purchased the car. So you can see here, this is the 1.5L is the salary, age is 32, and this particular person has purchased the car. So many persons are there. Some people have purchased the car and other people have not purchased the car, depending upon their salary and all this data. So basically, this age and this estimated salary is quite two important columns that are controlling where that particular person has purchased that car or not purchased that car. So this purchased and not purchased is the important column. So next time, whenever you will post an ad on Facebook, so you can check it out, if the age of person, what can be the age of person, and what should be its estimated salary, so that that person will purchase that car. So what you will do there, on Facebook you have got the control to promote your advertisement to only certain people. So you will choose some age limit, so from this age to that age, and then their estimated salary which is received from the Facebook side, so it should be higher than this one, this threshold, then only that person is going to purchase that ad. So it will increase the probability of purchasing if you do smart marketing. So in order to do smart marketing for any car advertisement, so this kind of data or this kind of model will help us. So we are having lots of entries in this particular data set. You can see here around 400 entries we are having in this dataset, and on this particular dataset we are going to operate now. So what we are basically going to do कि एक for example एक कार कंपनी है, उन्होंने उनकी एक एडवर्टीजमेंट पोस्ट करी है फेसबुक पे, और इतने सारे लोगों ने वो ऐड को देखा है, और उनका ये एज और उनका एस्टिमेटेड सैलरी ये इस वाले कॉलम के हिसाब से है। तो इनमें से जो जो लोगों ने कार को परचेस किया है, उनके परचेस्ड कॉलम में वन लिखा हुआ है, तो इस वाले बंदे ने इस कार को परचेस किया है, उसका सैलरी 25,000 है, एज 47 है, तो उसने कार को परचेस किया है।
और इस वाले बंदे ने कार को परचेस नहीं किया है, इवन इफ ही हैज सीन द एड बट ही हैज नॉट परचेस दैट कार। तो इसने एड देख के जस्ट ओवरलुक कर लिया है और उस कार को परचेस नहीं किया है। तो इससे हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कार परचेस कर रहे हैं। तो उनकी सैलरी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, या फिर उनका जो एज है वो मैटर कर रहा है। तो वो जो एड वहाँ पे पोस्ट करी है वो कौन से एज ग्रुप को टारगेट करना चाहिए, आगे चल के वो इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ में लगेंगी कि अगर एज उतना है, एस्टिमेटेड सैलरी इतनी होगी, तो क्या ये बंदा कार को परचेस कर पाएगा या फिर करेगा, वो हमें पता चलेगा अगर हम इस वाले डेटा पे एक मॉडल बिल्ड करेंगे और उस मॉडल को ट्रेन करेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा। Now, next time, whenever I will enter age of person and estimated salary of that person, in that case, our model will predict कि whether this person is going to purchase the car और whether this person is not going to purchase the car। तो हमें वहीं पे immediately पता चलेगा कि whether that particular person is going to purchase the car or not going to purchase the car by our machine learning model। तो हमें ये, और इससे हमें उस बंदे को वो एडवर्टीजमेंट भेजनी है या नहीं भेजनी है वो पता चलेगा। अगर हमें पता चला कि ये बंदा इस कार को परचेस ही नहीं करने वाला है, तो अननेसेसरीली व्हाई वी शुड वेस्ट अवर एड एक्सपेंसेस, और जो भी ऐड हम उसको क्यों दिखाएंगे। और अगर मुझे पता चलता है कि ये बंदे की प्रोबेबिलिटी हाई है कार परचेस करने की क्योंकि उसका एज इतना है, एस्टिमेटेड सैलरी इतनी है, तो हम उसी बंदे को ऐड प्रमोट करेंगे सो दैट इट विल मेक अ स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और हमारे सेल्स बढ़ेंगे एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। उस ऐड का जो आरओआई होगा वो बढ़ेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर ऐड के लिए मैंने 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका जो आरओआई होगा वो बढ़ेगा। तो एडवर्टीजमेंट के लिए वॉट एवर अमाउंट वी आर पेइंग, उसका आरओआई और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो मैटर। सो उसके लिए हमें मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं। नाउ विच एल्गोरिदम इज सुटेबल, तो यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में हम सोच सकते हैं। एक्चुअली दिस इज ऑल्सो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे परचेस की यस और नो टू कैटेगरीज है, तो इसे हम क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसको we call it as regression because its value will be 0 and 1, but it is some sort of classifier। तो ये classify ही करेगा लेकिन it is under regression category, where a special case of regression analysis where the outcome or the output variable has got only two values. As far as the regression is concerned, we have said that the regression, the outcome will have multiple values or it will have a value, it will not having the category. So in this particular case, if the output variable is having only two values, so it is special case of regression analysis where the output column or the dependent variable has got only two values. Now in previous data sets where we have predicted the salary was continuously varying and it was taking so many values. So even we have seen different 50 companies startup data also we have considered. Again, their profit was varying, it was taking any value. And also we have seen other examples also, even the position versus salary, again that salary was varying with position and it was taking any value. But this is not the case with this logistic regression. Here the outcome is exact two possibilities, not more than that. Okay, so with this knowledge, let's begin with the programming. So here I am having the dataset social networks ads.csv file which I have loaded over here. Now I'm going to create a file called, let's say, logistic.py. Okay, so logistic regression.py. So that's what the file I will create over here. And let me zoom in this particular area. Okay, so now I will be following our standard methods. Now step number one is loading the importing the necessary libraries. So this is step number one, and this is nothing but importing the required packages or libraries, whatever you can call. And now number one is import numpy as np, import pandas as pd, import matplotlib dot pyplot submodule as plt. Okay, so that's what we do every time. And now
we are ready to load our data set. That is step number 2. So step number 2 we will follow. So that's a loading the data set. Now here I will be using dataset variable. You may use any other also. And here pd dot read underscore csv. And here I will have to provide file path. So this is uh, social networks add.csv. That's the my file that I will load. And if you want to print some content of it, I can definitely do that using this head command. So now I will be getting some content from this particular file. Now here we go. So this is the small portion of my dataset. This is user ID, gender, age, estimated salary, and purchase. So for this example, I will ignore the user ID and gender column as a features, but I will be focusing on mainly focusing on age and estimated salary. And these two columns, age and estimated salary, I'm going to use for training purpose as an input uh, variables, and purchased is the output variable. So I will be training our model on this input variables and output variables. So age and estimated salary is also called as input variables, independent variables, predictor variables, or also called as features. Okay, features. And purchase, which is the output column, which is also called as output variable, dependent variable, or the target variable. Okay, so according to that we can define. So now we are having this data set which we have successfully loaded. Now here comes the step number 3. Okay, so in this particular step we are supposed to extract dependent and independent variables. So here extracting the predictors predictors and target variables. So predictor and target variables we are going to extract over here. So as we know, we have to create a list here. Predictors equals to my first predictor variable is age, and my second predictor variable will be estimated salary. So what I'll do, I'll just simply copy the name from here so that I will not make any spelling errors. And the target equals to, and in this I will copy this name purchased. This is my target, and of course it should be in single inverted commas indicating it is text. And now I will make x equals to dataset, then predictors dot values, right? And y equal to, which is the dependent variable, dataset, or the target variable, target dot values. Now I have successfully separated the input variable as well as the output variables or predictors and the target. Now the predictors are going to estimate the value of that particular target. Okay, so now as we are here, now next step, as you know, as we are having the input and output variables, so next important step is to separate the training set and the test set. Okay, so the next important step is splitting the data set into training and test set. So now I will use here step number 4, splitting the data set. And for that, as you know, from sklearn dot model selection import train test split function. Now with this, you will be able to create x underscore train and 20% data in x underscore test. Again, y underscore train
and again 20% data in y underscore test equals to train test split function. First of all, you split this x, you will get x train x test. Then split this y, you will get y train y test. Then test size you have to define, so let it be zero point 0.2 only, and the random state let it be 0. Okay, so this will be our random state 0, so that randomly data will be splitted. Okay, and now I will comment this also, because I'm not worried about printing the head of my data set. So this is how we will split the data set. Now the data set is splitted, and now we are ready to operate on, or to build some model called logistic regression model, and that model will be used to predict whether the particular person is going to purchase that car by seeing that ad, or that particular person is not going to purchase that particular car. So it will be dependent on the model which you are going to train, and it will be dependent on some independent variables called age and estimated salary. So in future we will take user input from the keyboard. We will ask user to enter his age, and we'll ask user to enter his estimated salary, and based on that we will predict whether that particular person is going to purchase the car or not going to purchase the car. But here there comes one more step which is additional, which we haven't discussed in the last few practicals, and this is nothing but feature scaling. And why it is important, why we need to scale the feature, that we will discuss, why we should scale our feature. Okay, now let's go back to our data set and we'll see what is there in the data set. Okay, now if you see this data set, here we are having age and estimated salary. These are the two features. These two features are very much important, age and estimated salary. So here you see the age in the range of 1935, so it is below 100. Its range is below 100. And the estimated salary is in thousands, 19,000, 20,000. It's again four, at least it is 4 to 5 digit value is there. This value, if you see, this is around 5 digit value, but this is only 2 digit value, so it's quite having the huge difference between these two columns. So this column and this column, if you consider these two values, this is having huge difference. That's why feature scaling is important, because this is having some different features and this is having some different feature, but their values are, the difference between these two values is huge. In such cases we should scale down to features. For example, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. आपको एक एप्पल, एक फ्रूट्स आइडेंटिफाई करना है, फ्रूट्स को आइडेंटिफाई करना है, तो उसके उसके लिए आपके पास फ्रूट्स के इमेज है. तो एक फ्रूट का इमेज का साइज काफी बड़ा है और दूसरा फ्रूट का इमेज का साइज काफी छोटा है. तो इन दैट केस एक फ्रूट काफी साइज में बड़ा दिख रहा है और एक काफी छोटा दिख रहा है. तो इन दैट केस दो जो फ्रूट्स है हैविंग टू डिफरेंट शेप्स, so it will be very much difficult to train the model with this particular data. In some algorithms, not in all algorithm, in some algorithms, okay, it's not applicable to all algorithms, but in some algorithms ये यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल ये जो एल्गोरिदम है, जैसे कि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ये यूज करेगा यूक्लिडियन डिस्टेंस, या फिर KNN क्लासिफायर की भी बात करेंगे हम आगे चल के. वहां पे कंपल्सरीली आपको फीचर्स को स्केल करना पड़ेगा. नाउ दिस इज अगेन यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस. नाउ यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस. ओके, फॉर एग्जांपल, नाउ इफ आई कैन शो यू दैट विथ सम पेन टूल. फॉर एग्जाम्पल, ये अपना एक्स वाई एक्सिस है और दिस इज माई एक्स एक्सिस. ओके, और ये ऑन वाई एक्सिस दीज आर सम वैल्यूज. तो यहाँ पे है 0, यहाँ पे है लेट्स से 20 एंड सो ऑन. ये आगे चलेगा, आगे चलेगा, बहुत आगे चलेगा, और यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे है 10,000. 10K है, मतलब 10,000 है. ओके,
तो अब मैं अगर इन दोनों फीचर्स को प्लॉट करने की कोशिश करूंगा, तो लेट्स से यहाँ पे एक फीचर है जिसका नाम है एज। तो एज मान के चलो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट आएगा, वो होगा एज का पॉइंट, दिस इज माय एज। यहाँ पे अगर प्लॉट करूंगा, और उस एज के लिए जो करस्पॉन्डिंग सैलरी है वो 10K के भी ऊपर है, तो समथिंग पॉइंट यहाँ पे कहीं तो आएंगी वो। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे गिरेंगे, दिस यहाँ पे इस वाले लोकेशन पे, और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे। काफी ह्यूज डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में, जो गैप है ये काफी ह्यूज होगा। दिस गैप is now very huge. Okay, this is large gap. So this is the problem when the two features are having distinct value, different ranges. Now यहाँ पे ये प्रॉब्लम है अपने वाले डेटा सेट के अंदर, एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो एज जो है ना वो काफी छोटा है, और जो एस्टिमेटेड सैलरी है उनका वो काफ़ी हाई है। तो इन दोनों के बीच में अगर इक्विलिडियन डिस्टेंस की बात हम करेंगे, या फिर इफ़ यू ट्राई टू कैलकुलेट, तो इट विल बी डिफिकल्ट, और नॉट डिफिकल्ट बट गेटिंग ह्यूज डिफरेंस। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर हम ऐसा कुछ कर पाए कि ये दोनों फीचर का जो रेंज है ना एक स्टैंडर्ड रेंज बन जाए, और वो जो दोनों फीचर्स है वो एक दूसरे के करीब आ जाए। मतलब ये जो फीचर है जिसकी रेंज है 10,000 to 1 लाख, और ये जो है उसकी रेंज है 10 to 100 लेट्स से, तो ये 10 to 100 और 10,000 to 1 लाख, इन दोनों को अगर हम स्केल डाउन करें तो एक स्टैंडर्ड साइज में अगर हम उनको लेकर आए तो वो बेटर होगा। मतलब अगर एक एप्पल का फ्रूट रिकॉग्नाइज कर रहे हो और दूसरा लेट्स से बनाना रिकॉग्नाइज आप कर रहे हो, लेकिन एप्पल का जो फ्रूट है उसकी जो साइज है आपके डेटा सेट में, और इमेज की जो साइज है वो काफी बड़ी है, और जो बनाना है काफी छोटी है। तो अगर हम ऐसा कर पाए कि एक तो बनाना की साइज बढ़ा दें और एप्पल की थोड़ी छोटी कर दें, तो दोनों की जो साइज़ है वो इक्विवेलेंट आ जाएँगे वो इमेजेस के अंदर। तो अगर ऐसा होता है तो हम उसको बोलेंगे हमने स्केल डाउन कर दिया, एक को स्केल अप कर दिया, एक को स्केल डाउन कर दिया। तो इससे क्या हो गया, स्केलिंग हो गया। मतलब एक छोटा बड़ा कर दिया या फिर बड़ा छोटा कर दिया, तो स्केलिंग कर दिया। स्केल करना मतलब उसके साइजेस कम ज़्यादा करने। तो यहाँ पे भी अपने डेटा सेट में एग्ज़ैक्ट सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पे वी आर हैविंग डिफरेंट रेंज इन एस्टिमेटेड सैलरी, और यहाँ पे एज के अंदर भी डिफरेंट रेंज है। तो अगर हम इस एज की साइज लेट से थोड़ी बढ़ा देते, या फिर इस एस्टिमेटेड सैलरी जो है उनकी जो रेंज है वो थोड़ी कम करवा देते हैं, सो इन दैट पर्टिकुलर केस इनका एक स्टैंडर्ड डायमेंशन होगी एंड स्टैंडर्ड उसकी रेंज होगी, तो इट विल बी बेटर। ओके, तो दैट प्रोसेस is nothing but feature scaling. Okay, so that process is nothing but feature scaling। और वो बहुत सारे algorithms में जैसे कि KNN है या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, आगे चल के भी हम क्लासिफायर्स और देखेंगे, वहाँ पे कंपल्सरीली करनी ही पड़ेंगी। Why? Because they use the what we can say Euclidean distance for their basic operation। So in this particular case we have to scale down our features, उनको scale करना काफी important है। So we'll scale all such features, and after scaling such features we will be able to fix this problem। Okay, so scaling is very important. Now we'll see how to scale our features. Now, in order to scale, again, we will be using one important library of this Python, and that is again the sk learn library only. And from that, from the pre-processing, we are going to use the standard scaler. So from sklearn dot pre-processing import standard scaler। Okay, this is going to scale up and scale down। Okay, वो scaling करेगा, तो standard scaler, let's say st, or we can call it as sc also, equals to standard scaler, this one which we have loaded over here, this is standard scaler। And now we will change xtrain and xtest data, so xtrain equals to this sc dot fit transform। Okay, always you'll have to use this fit transform, and this is x underscore train। Okay, right, and this is x underscore test,
which is again sc dot fit transform x underscore test. Okay, so now this x train and x test, which actually represents this complete x. Otherwise, you can scale this x also. Before separating, also you can scale it, and after that you can split it out. That's also fine. But I have split it firstly, and after that I have scaled. So now our model, whatever we are having x train and x test, now that will be scaled properly. So if you want to check it out now, what happens to the x? So if you print the x test here, now you will get to know the difference after scaling what we will get. So after running this one, you see here these are two values. Now this actually two columns you are getting over here. Now these two columns are having quite identical values. Now one is age. This one column represents age, and another column represents their estimated salary. But if you notice over here, now both the values are not having huge difference. But in previous case, before actually scaling, you must have noticed that they, or you have seen in the data set only, that x the age is very small, which is 19, 20, something like that, and the estimated salary is around 20,000, 30,000, 40,000, like that. So it was having huge difference. But after scaling, now this is converted to some standard values. Now these two columns are having identical values or identical range. So that's the importance of scaling. So in some algorithms, scaling is compulsory. In some algorithms, even if you do not scale, that doesn't matter. Like in previous cases, we haven't scaled, but that was not creating any problem to us. But even if you scale there, that's quite interesting. Okay. Okay, so there could be different types of scaling functions, okay, based on their mathematical equations. So the mean max scalar and standard scale, that's what you're asking. So it will be having different mathematical expressions. So minimum and maximum values will be considered for mean max scalar, and the standard scalar will be taking some averaging values or some standard rate. Then in that case, it will convert to positive as well as some negative term. So the mathematical expression is different for each and every scalar. So if you use the standard scalar, its mathematical expression will be different, and if you use the min max scalar, its mathematical expression will be different to scale that data. Basically, scaling is nothing but, for example, if you're having the value 10, and if you want to convert the 10 to 100 range into 0 to 1, so in that case you will divide that by 100. Simply you are going to divide it by 100, so it will be converted to 0 to 1 range. So that formula will be different for different scaling functions. So once you scale the variables, you will be getting some scaled version of that data, and now you will be able to train your classifier on this particular data. Now, as usual, our next step will be fitting the model. Okay, so next step will be fitting the model. Now, as far as the fitting the model is concerned, this time I'm going to use the logistic regression. So from sklearn dot linear models, import logistic regression. Okay, so from that you will be importing logistic regression this time. And now the classifier you will define, or you may give any name also to this object. So I am giving classifier as a name. You may give any other name also, as we are going to classify some sort of classification we are going to do. So logistic regression, this time we will call it, and I will pass random state to 0 as usual, and then classifier dot fit function. Now fitting is nothing but passing the train set. So this is x underscore train comma y underscore train, right? So classifier equals to logistic regression. That's what we're going to do. Previously we have used linear regression, this time we are using logistic regression. And classifier dot fit function. Now fit function is all about training, and for that purpose we are going to use
X train and Y train. Now X train and Y train is around 80% data from our data set, which is used to train the model. Now once the model is trained, now we can evaluate the performance of this model, and now it is some sort of classifier. We can evaluate performance based on some confusion metrics. Okay, now for that we can go with the confusion metrics, and based on the confusion metrics we will be able to evaluate the performance of our metrics of our model. Also we can use the classifier.score also, so to evaluate the performance. So the print performance equals to this classifier dot score, and here we have to give some x and y value. So here I will give x train, x underscore train, and this will be y underscore train. Okay, so x train and the Y train. That's what I will be using to find out the performance of our model. Now this will print the performance of our model, and let's run this and we'll check how much performance we are getting, or the score we are getting. Now this time we are getting around 82% uh, score. That is quite good, not bad, or we can't say that's bad, so it's good. So now 82% we are getting here, and okay, let be a warning is there, so it's warning only, not the error before the performance. Okay, fine. Now one more performance measure is generally used whenever we are doing classification kind of stuff. So though it is some sort of regression, but still, as we have to classify only two categories, zeros and ones, so it is some sort of classification. So in that particular case we can use confusion metrics. So now confusion metrics क्या होता है? It's all about true positives, true negatives, false positives, and false negatives. Okay, so it's all about that thing. So we will print that confusion matrix also. Now, in order to load the confusion matrix, or here I'll write calculating confusion matrix or the confusion. This we are going to understand what is confusion matrix, but in future lectures in classifier section. But right now I will give short idea about the confusion matrix. So from the sklearn library dot metrics import confusion matrix, and now we can operate confusion matrix. So in order to get the confusion matrix, so we'll take it for the testing data set. So we'll take the prediction, y prediction, classifier dot predict, and here I'll pass x underscore test. Okay, so now confusion matrix cm equals to confusion matrix, and here the we have to provide, so it is showing some guidelines to us: true values, actual values versus the predicted values. Now for x test, that particular input columns, the true values are y test. Okay, the actual values are y test, जो कि एक्चुअल वैल्यूज है, लेकिन प्रिडिक्टेड क्या है? सिस्टम, हमारे मॉडल ने या फिर क्लासिफायर ने क्या प्रिडिक्ट किया? वाई प्रिडिक्शन. सो इट हैज प्रिडिक्टेड दिस वाई प्रिडिक्शन, बट द एक्चुअल वैल्यूज क्या है? वाई टेस्ट, क्योंकि आपने डेटा सेट में एक्स टेस्ट के सामने वाई कॉलम में और आउटपुट कॉलम में वाई टेस्ट वैल्यूज है, लेकिन अपने क्लासिफायर ने जब हमने एक्स टेस्ट इनपुट दिया तो उसने प्रिडिक्ट किया है वाई टेस्ट. सो कंफ्यूजन मैट्रिक्स इन दो पैरामीटर पे कैलकुलेट होगा, एक्चुअल वैल्यू वर्सेस द प्रिडिक्टेड वैल्यूज. तो उसके बाद यहाँ पे हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्रिंट कर पाएंगे और हम देखेंगे कि इसमें क्या है. तो लेट्स रन दिस confusion matrix, and now we can see this kind of result. This is the confusion matrix. तो ये जो है ना, these values 52, these are true positive values, और ये जो 19 यहाँ पे है, this is true negative. तो ये confusion matrix actually it depends on how many categories you are having. If you are having two categories like 0 and 1, it will be 2 by 2 matrix, और उसके dependent on that
अगर 3 कैटेगरीज है तो 3 by 3 का मैट्रिक्स बनेगा। सो अगेन इट विल बी ऑन दैट। तो इसका मतलब क्या है कि 52 प्लस 6, इसका मतलब है टोटल कितना हुआ 58। अगर मैंने 58 सैंपल्स अपने सिस्टम को दिए और या फिर 58 लोगों का डेटा मैंने सिस्टम को दिया, विच इज नथिंग बट 52 प्लस 6, 58 लोगों का जिन्होंने कार परचेस किया है। तो एक्स टेस्ट में ऐसे लोग हैं जो 50 एक्स टेस्ट में से मैंने 58 लोगों को चूज कर लिया जिन्होंने एक्चुअली कार को परचेस किया है। तो ऐसे लोग जिन्होंने कार को परचेस कर लिया है जो 58 लोग हैं। तो आउट ऑफ दैट 58 पीपल 52 को अपने सिस्टम ने बोला है कि परचेस किया है और 6 लोगों को इनकरेक्ट बोला है कि उन्होंने परचेस किया है, फिर भी उनको बोला है कि परचेस नहीं किया है। तो आउट ऑफ 58 उसने 52 को करेक्टली बोल दिया कि परचेस्ड एंड 6 को इनकरेक्टली बोल दिया कि नॉट परचेस्ड। ओके। और जब मैंने 19 प्लस 3 दैट मीन्स कितना हुआ 22, 22 नंबर ऑफ पीपल ऐसे दिए जिन्होंने परचेस नहीं किया है। तो आउट ऑफ 22 19 पीपल को उसने करेक्ट बोल दिया कि उसने नहीं किया है, एक्चुअली उसने नहीं किया है। और ओनली 3 पीपल को उसने इनकरेक्ट रिजल्ट दिया। तो कहने का मतलब है कि 52 प्लस 19 सैंपल्स को अगर मैंने 52 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 19 इतने सारे सैंपल्स अगर मैंने रैंडमली दे दिए अपने मॉडल को, तो उसमें से 52 प्लस 19 ये जो डायगोनल है ना, वो उसने एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर लिया। और बाकी के 6 प्लस 3 मतलब ओनली 9 सैंपल्स को उसने इनकरेक्ट प्रिडिक्ट कर लिया। सो दैट्स नथिंग बट कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये होता है। तो इसमें ट्रू पॉजिटिव मतलब एक्चुअली उसने परचेस किया है और उसको हमने यहाँ पे परचेस किया, तो ट्रू पॉजिटिव 52 हो गया यहाँ पे। ओके। एंड दिस इज 3A है जो है फॉल्स पॉजिटिव है क्योंकि ये एक्चुअली उसने परचेस नहीं किया है लेकिन फिर भी उसको बोल दिया कि परचेस किया है। 19 है ट्रू नेगेटिव, उन्होंने परचेस नहीं किया और अपने सिस्टम ने भी बोला है कि उसने परचेस नहीं किया या फिर अपने मॉडल ने भी बोला है कि परचेस नहीं किया है। एंड दिस इज फॉल्स नेगेटिव, एक्चुअली नेगेटिव नहीं है, उसने परचेस किया है लेकिन सिस्टम ने बोला कि नहीं परचेस किया है या फिर मॉडल ने प्रेडिक्ट किया नहीं परचेस किया। तो ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव मतलब एक्चुअली वो उसने परचेस किया है and our system or model also says it has purchased, so true positive। true negative मतलब क्या हुआ कि the actually that person has not purchased, so in real he has not purchased, and our model also says that particular person hasn't purchased the car, so that means it is true negative हुआ। false positive क्या हुआ, उसने परचेस नहीं किया है लेकिन सिस्टम ने बोल दिया परचेस कर लिया या फिर मॉडल ने प्रेडिक्ट कर लिया परचेस कर लिया, तो ये फॉल्स पॉजिटिव है। एक्चुअली वो पॉजिटिव नहीं है लेकिन सिस्टम या फिर मॉडल हैज प्रेडिक्टेड पॉजिटिव। फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव क्या है कि एक्चुअली सिस्टम ने परचेस किया है या फिर उस पर्टिकुलर बंदे ने कार को परचेस किया है लेकिन और मॉडल प्रिडिक्टेड दैट दैट पर्सन हैजंट परचेस द कार, सो इट इज फॉल्स नेगेटिव, गलत नेगेटिव है। ओके। तो ये वाला चीज है यहाँ पे। सो दिस डायगोनल एलिमेंट्स रिप्रेजेंट ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। सो 52 वाला है ट्रू पॉजिटिव, 19 वाला है ट्रू नेगेटिव। So these two things are actually correct predictions, but false positive, which is 3, and false negative, which is 6, these are two incorrect predictions। तो इससे कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ये पता चलता है कि अगर मैं रैंडमली इतने सैंपल्स दूंगा तो आउट ऑफ दैट हाउ मेनी सैंपल्स विल बी प्रेडिक्टेड करेक्टली एंड हाउ मेनी सैंपल्स विल बी प्रेडिक्टेड incorrectly। So that's the performance metrics on based on this confusion matrix you can actually evaluate the accuracy using some formula। F1 score you can evaluate, so that we'll see in the classification wala चैप्टर। तो उस वाले पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर वी विल सी कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द F1 स्कोर एक्यूरेसी एंड डिफरेंट परफॉर्मेंस मेजर्स ऑफ द क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यूजिंग सम कंफ्यूजन मैट्रिक्स बाय टेकिंग हेल्प ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें क्या बताता है, दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। तो यहाँ पे हमें फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव्स के वैल्यूज यहाँ पे मिलते हैं। तो इससे मुझे क्या समझ में आता है कि सिस्टम या फिर अपना मॉडल कितने सैंपल्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाया
और कितने सैंपल्स को इनकरेक्टली प्रिडिक्ट कर पाया. Okay, so this is all about the confusion matrix that we have printed. Now it's time to take the real world data, and on that particular data, on the real world data, we will try to predict the value of our prediction of our, or whatever the prediction is there, or whatever the output column is there, that we are going to predict. So here now the next step is prediction on real time data, real time input from user. तो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव है कि हम यहाँ पे एज एंटर करेंगे, एंड देन वी विल एंटर द सैलरी, एस्टिमेटेड सैलरी ऑफ दैट पर्सन, और हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या उसने परचेस की होंगी कार या नहीं की होंगी. तो उसका जो परचेसिंग है वो हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे. अगर परचेसिंग 0 आया, इसका मतलब है उसने कार को परचेस नहीं किया है. और अगर परचेसिंग 1 आता है, या फिर आउटपुट अगर हमें 1 मिलता है, तो दैट मीन्स दैट पर्सन हैज परचेस दैट कार. So let's try that. So here we'll take the user input. So first of all we'll take age. So here int input, enter the age. Okay, और एज उस जो भी बंदा है उसका एज यहाँ पे डालना है. एंड देन सैलरी, सो यहाँ पे इंट इनपुट एंटर द सैलरी, सैलरी को हम लेंगे यहाँ से. एंड नाउ वी विल फॉर्म अ टेस्ट सैंपल. सो नाउ दिस टेस्ट सैंपल could be like this: test underscore sample equals to डबल, क्योंकि हमें इसके अंदर चाहिए एज कॉमा सैलरी, इस वाले फॉर्मेट में चाहिए. एंड देन हम क्लासीफायर को प्रिडिक्शन के लिए देंगे. तो यहाँ पे रिजल्ट हम देंगे, रिजल्ट्स इक्वल्स टू क्लासीफायर डॉट प्रिडिक्ट, और इसके अंदर हम देंगे ये टेस्ट सैंपल. तो फाइनली वी विल प्रिंट द रिजल्ट. यहाँ पे परचेसिंग स्टेटस क्या होगा उसका, 0 मतलब नॉट परचेस. ओके, वॉट एवर जो भी आएगा. एंड दिस विल बी, लेट्स से आई विल जस्ट गिव कॉमा, एंड जो भी ये रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे. तो इसका परचेसिंग स्टेटस क्या होगा वो हमें यहाँ से पता चलेगा. सो नाउ लेट्स रन दिस वन मोर टाइम. नाउ वी हैव गॉट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड द परफॉर्मेंस ऑल्सो. एज मैं डालता हूँ कि मेरा एज है 32, एंड एंटर द सैलरी, सैलरी लेट्स से 20,000. So now purchasing status अगर 1 आता है, that means the car is purchased. So that particular person इतनी सैलरी यानी इतना अगर एज होगा तो वो परचेस कर पाएगा. अगर आप दूसरे इनपुट दोगे तो इन दैट केस यू विल बी गेटिंग सम different value. And I think we should consider the scaling also, because here while training we have considered training scaling that uh, feature. Now we should consider this scaling also there. So this sc dot fit transform we should apply to this test sample as well. So before actually giving, so test sample must be equal to sc dot fit transform and this test sample. Okay, because we have scaled the feature and after that we have given to the system as input, so we should do that. And again we'll test for the same thing. So now again the age is expected, so my age is let's say 32 again, and the salary is 20,000 this time. So here now the correct result we are getting. So previously we got the wrong result because we haven't scaled the feature, because ट्रेनिंग के टाइम पे हमने स्केल किए हुए फीचर्स दिए थे, और टेस्टिंग के टाइम पे हम, या फिर यहाँ पे रियल डेटा प्रेडिक्शन के टाइम हम एक्चुअल फीचर से यूज कर रहे हैं. जितना एज आया उतना यूज कर रहे हैं, सैलरी जो भी है वही यूज कर रहे हैं. सो एक्चुअली स्केलिंग करके हमें देना चाहिए, बिकॉज हमने ट्रेनिंग के टाइम पे स्केल डेटा यूज किया है. तो रियल टाइम इनपुट जब भी हम लेंगे तो उस टाइम भी हम उसको स्केल डेटा ही यूज करेंगे. और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे जो परचेसिंग स्टेटस है वो इस तरह से आता है, तो इसके बाद
आपको देखना है कि वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज परचेस्ड और नॉट। तो आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो कि मतलब आपको रिजल्ट अच्छे से दिखाना है। रिजल्ट ऑफ जीरो, क्योंकि ये एरे मिल रहा है यहाँ पे, वी आर गेटिंग द एरे और सिंगल डायमेंशनल एरे इक्वल्स टू जीरो। तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट द पर्सन हैज नॉट परचेस्ड द कार। ओके, ये आएगा। एल्स, इस तरह से हम if else भी लगा सकते हैं, प्रिंट द पर्सन हैज purchased the car। Okay, so that the result will be quite यूजर फ्रेंडली, बिकॉज जीरो एंड वन मिलेगा तो क्या इससे क्या सिग्निफाई कर पाओगे आप। सो यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू सम रीडेबल फॉर्मेट। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, सो एज वी नो देयर आर ओनली टू कैटेगरीज, जीरो एंड वन। सो इफ इट इज जीरो, दैट मीन्स द परचेज person has not purchased this car, and if it is one, that means the person has purchased the car. So we'll run this one, and now here we have to enter the age, let's say 32, and the salary is, let's say 80,000। तो सैलरी थोड़ा बढ़ा देते हैं अभी, and now it's again zero, so person has not purchased the car even if for this particular age and this salary. So it's depends on the whatever the combinations from letters, and also it depends on this confusion matrix, so let it be. So like this we can get some results, okay, based on this, and we can make it some readable form, or we can convert that result to readable form. So let's quickly revise the things that we have discussed over here. Now, the number one thing, or the step number one, as usual, is to all about loading the important libraries. Step number two is all about loading the data set. So again, we'll see this one. So step number one is all about importing the required libraries. That's what we need to have. Like numpy library is important for array handling. Secondly, the pandas library is required for handling the data sets or the csv file. Matplotlib library is again important for plotting. We haven't plotted in this particular example, but if you want, you can consider plotting also. And by plotting you can get to know the type of data, or how the data is varying, or the how the dependent variable is varying with respect to the independent variable. So that's what we can actually discuss using that. Okay, and the next one is loading the data set, this one. Next is extracting the predictors and the target variable. So we have extracted our predictors, which is age and estimated salary, and the target variable is purchased variable. Splitting data set into uh, some form, like 80% data for training and 20% data for testing. Feature scaling is important in this particular algorithm. In most of the algorithm, it is important. And even if you scale features in all the algorithms, that's totally fine. It's perfectly okay. It's having no issue. But scaling makes it into the some standard form. And there can be different scaling functions also, like some standard scaler or some min max scaler is there. So if the function is, if you are using min max scaler, in that case the output will be having with some different formula, and after scaling you will get values in the range 0 and 1, okay, as it is min max, minimum or maximum, okay, zeros and 1 in that particular form, or sometimes minus 1 to 1, okay, in the range minus 1 to 1. So it can be different. And the standard scalar, it will be a normal distribution or standard normal distribution. Statistically, if you have studied this in the statistics, the normal distribution of any data, or the standard normal distribution, where we have to calculate some mean, and then its variance and all, okay, to its unit variance. So the mean value is nothing but the average value, and the variance is nothing but how much it is varying from that average value. So standard scaler will do that. It will consider mean. Let's say we consider the mean value as 0.
So for that particular data, we'll make it 0 as a mean. So for example, you are having data of age which is from 10 to, let's say, 90. That's the age. So whatever will be the age of that particular, so we will calculate the mean value. So mean value, let's say 50, so we'll consider that 50 as 0. Okay, so we'll make it 0, and from that we will calculate variance, and we will accordingly we will make a distribution of data, and that will be a standard normal distribution, which you may must have studied in the statistics, but it's not required to understand all those stuff. Okay, though you need to understand how it does, but no need to go into deep into the formulas, because you have got this standard function. Okay, so whatever the mathematics is there behind that, don't worry about it. So standard scalar is all about the calculating the means and its variance, and accordingly it will distribute your data. And if you consider mean max scalar, in that case it will be in zeros and ones, or sometimes in -1 to 1 range. Okay, -1 to +1 range, as it is mean max uh, function. Okay, now next is fitting the model. Now scaling, why scaling is important, I have discussed. If the data set is having two different ranges, if the two features of dataset, or two or more features of your datasets having different ranges, then in that particular case there could be a high Euclidean distance. So in that particular case you should scale your data, and it's always recommended, and it is compulsory to scale even in the KNN classifier that we are going to see in the future. Now fitting the model, we should fit the model on the training and X train and Y train, so that it will be fitted, or it will be trained on the this particular data set. And at the end we will calculate some performance of this model, like score and the confusion matrix. Now confusion matrix is something new that we have introduced in this practical. It's all about true positive, true negatives, false positive and false negatives. And after that we have tested our model on real world situation. Now here the user will input something, and based on that input, whether that user will purchase the car or not going to purchase the car, we can calculate by using this simple function. By using this something, or this kind of if else structure, we can establish, so that the result will be more readable. So in future, in our projects, what we have to do, we have to design a web application. एक GUI इसको बनाना है, web GUI, और एक small website we can say. और वेबसाइट के अंदर हमें इनपुट बॉक्सेस मिलेंगे। उस बॉक्सेस के अंदर एज और सैलरी इनपुट करनी होगी हमें, और उसके बाद प्रेडिक्ट का बटन होगा, उसको हिट करेंगे हम, और प्रेडिक्ट का बटन हिट करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा, सच काइंड ऑफ रिजल्ट। समटाइम्स अगर हम कुछ डिसीज डिटेक्शन काइंड ऑफ करने वाले होंगे, तो रिजल्ट शुड बी इज एक्सपेक्टेड ऑन द ईमेल और एज अ टेक्स्ट एसएमएस। तो वो भी हम इंटीग्रेट करेंगे, which we have already seen in the previous sessions. Okay, but okay, that will do in future, not to worry right now, but just understand how the logistic regression works and other regression algorithms works. Nearly all steps are similar. If you consider all the regression analysis, everything is similar. The fundamental concept is similar, like loading the libraries, loading the data set, splitting the data sets, fitting the model, and after that evaluating the performance and testing on real world data. Everything is same. Some steps are quite we are adding, like here feature scaling we have considered here. Sometimes encoding the categorical variables. In last time we have seen there were labels, we have encoded that. So in some cases, you have to add these extra steps, like here feature scaling we have considered. In the last practical, we have considered label encoding. So sometimes you need to consider label encoding plus feature scaling also. Now अगर इस वाले केस में भी अगर हम इस वाले कॉलम को यूज करते ना, जेंडर वाले कॉलम को हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है, लेकिन अगर आप इसको यूज करते, तो आपको इसको लेबल एनकोड करना पड़ता, मेल फीमेल जो है ना, इसको लेबल एनकोड करना पड़ता। एक बार इसको लेबल एनकोड करते, मेल को 0, फीमेल को 1, तो फिर आप ये 3 कॉलम यूज कर पाते। ओके, फॉर प्रिडिक्शन, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस 2 कॉलम्स, यू मे हैव यूज 3 कॉलम्स। अगर इसको हम लेबल एनकोड करते, और 3 कॉलम यूज करके भी आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। सो दैट आई विल कीप एज एन असाइनमेंट। आप यहाँ पे लेबल एनकोडर यूज करो, इसी वाले, मैं इसका कोड तो आपको रेडीली प्रोवाइड कर ही दूंगा on the WhatsApp group, but you use the label encoder there and encode that categorical variable like male female जो भी है उसको encode करो, and after that you test your model, और उसके बाद आप ये performance evaluate करो, confusion matrix find out करो,
और आप कमेंट करो कि कौन सा बेटर है, whether after considering that male female wala you are getting better performance, or by considering not considering that male female wala column you are getting performance, you can calculate. And of course you have to scale all those things, that whatever you will get you need to scale using the standard scaler. तो आप दो चीज़ों से करो और आपको पता चलेगा कि किसका परफॉर्मेंस बेटर है. Okay, so that's the end of the today's session, and now we will wait in chat section for a few minutes to consider your doubts and queries regarding the today's session. Okay, so there is a query regarding this y prediction wala part. I think I have stopped the screen sharing, so I will reshare the screen so that I will show you that part. Okay, so the query regarding this y prediction. So y prediction is what? This is predicted values, and we are predicting from this particular dataset. तो प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास अभी दो तीन ऑप्शन है. पहले तो क्या करेंगे हम, जैसे हमने मॉडल को ट्रेन कर लिया, हमने हमारे पास लेट्स से 100 नंबर ऑफ रोज थे, 100 नंबर ऑफ सैंपल्स थे. आउट ऑफ दैट 180% डेटा हमने ट्रेनिंग के लिए यूज किया. तो 80% डेटा पे हमने मॉडल को फिट किया या फिर ट्रेन किया, और बचा हुआ जो 20% है वो भी हमारे पास है. तो हम क्या करेंगे, मुझे प्रिडिक्ट करना है, मतलब क्लासिफायर तो अभी ट्रेन हो चुका, ये जो क्लासिफायर है दिस इज नाउ ट्रेंड, इट इज कंप्लीटली ट्रेंड. ये क्लासिफायर इज नाउ कंप्लीटली ट्रेंड. नाउ ये जो क्लासिफायर है नाउ इट इज एबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम. तो अभी ये प्रिडिक्ट करना है, तो प्रिडिक्ट करने के लिए जैसे मैंने लास्ट में यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू दिया, सिंगल एज एंड सिंगल सैलरी दिया, तो उसको सिंगल रिजल्ट देगा, 0 या फिर 1, इस तरह से प्रिडिक्ट करेंगे. लेकिन क्या मैं एक साथ पूरा एज का एक रो, एज का एक कॉलम और सैलरी का एक कॉलम, ऐसे 10 लोगों का एट ए टाइम दे सकता हूँ क्या? तो डेफिनेटली आप दे सकते हो. तो वो वाला चीज है ना, वो यहाँ पे है जो हमने यहाँ पे प्रिडिक्शन किया ना. अभी एक्स टेस्ट मतलब क्या है, एज और सैलरी के वैल्यूज है, और 20% वैल्यू. अगर मेरे पास 100 का डेटा है, तो आउट ऑफ दैट 100 मैंने 20 रोज या फिर 20 वैल्यूज मैंने रिजर्व किए थे एक्स टेस्ट के अंदर. तो एक्स टेस्ट के अंदर मेरे पास 20 लोगों का या फिर 20 पीपल का एज और उनका एस्टिमेटेड सैलरी है. तो मैंने क्या किया, उनको 20 पीपल का एट ए टाइम दे दिया, किसको, क्लासिफायर को, और बोला कि आप इसको आप प्रिडिक्ट करो. तो ये जो क्लासिफायर है इट विल प्रिडिक्ट फॉर दैट 20 पीपल एट वंस. तो ये जो प्रिडिक्ट फंक्शन है उसको यहाँ पे हमने एक ही वैल्यू दिया, एक ही बंदे का एज एंड सैलरी दिया, लेकिन हम इसको एट ए टाइम मल्टीपल लोगों का भी दे सकते हैं. उसके लिए हमें इस तरह से, जैसे कि टेस्ट डेटा सेट है, तो हम अगर उसका कुछ एरे बनाएंगे एज का और कॉलम इसका सैलरी का, तो 2 डायमेंशनल एरे उसको एट ए टाइम दे सकते हैं. तो अब ये वाई प्रिडिक्शन जो होगा, दैट विल बी द प्रिडिक्शन फॉर दिस 20 पीपल. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस वाई प्रिडिक्शन कितने लोगों के लिए है, 52 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 19, इतने लोगों का प्रिडिक्शन है. क्योंकि अपने डेटा सेट में टोटल वैल्यूज है कितने, 400. सो 400 अपने डेटा सेट के अंदर वैल्यूज है. सो आउट ऑफ दैट 400 20% हम कंसिडर कर रहे हैं. सो 400 में से अगर आप 20% निकालोगे तो इट विल बी अराउंड 80. तो 52 प्लस दिस 19 प्लस दिस 6 प्लस दिस 3, ये अराउंड कुछ निकल के आ रहा है, आई थिंक 78 के अराउंड निकल के आएगा. ओके, दिस इज 52 प्लस अगर हम 20 कंसिडर करेंगे, सो दैट विल बी 62, 72 प्लस 9. तो 72 प्लस 9 अगर हम करेंगे सो दैट विल बी 81. सो 81 माइनस 1, सो 80. सो ये 80 है अराउंड. ओके, सो ये 80 है, दैट मीन्स 400 में से 20% है. तो इनको एट ए टाइम दे दिया और उसका प्रिडिक्शन वाई प्रिडिक्शन में मिल गया. तो अगर आपको अगर इसको डिस्प्ले करना है ना, तो आपको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा के दिखा दूँ कि ये वाई प्रिडिक्शन एक्चुअली मुझे क्या मिलेगा. 0 और 1 का 0101 इस तरह से मिलेगा. ओके, आया यहाँ पे. तो ये 80 लोगों को यहाँ पे प्रिडिक्शन मिला एट ए टाइम. तो 80 लोगों का प्रिडिक्शन क्या है कि ये पहले वाले बंदे ने परचेस नहीं किया लेकिन इस वाले बंदे ने परचेस कर लिया. तो यो एट ए टाइम वी कैन गेट prediction for 80 number of people if we pass that much data to predict.
और लास्ट में हमने यही चीज किया है, लेकिन एक बंदे के लिए किया है। ओके, दैट्स द डिफरेंस। एंड वंस वी गेट द वाई प्रेडिक्शन, तो ये जो 80 आउटकम हमें मिला है, दिस इज प्रिडिक्टेड। लेकिन एक्चुअली उस डेटा सेट में क्या है, तो वो है वाई टेस्ट। जो डेटा सेट है एक्चुअल में, उसमें भी ऐसे ही 0001 है ना, वो एक्चुअल डेटा सेट में कई इनपुट्स है, उसको कुछ तो है। एंड प्रिडिक्टेड जो है वो ये है, दिस इज प्रिडिक्टेड वन। तो इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे या फिर वो चेकआउट करेंगे, और उससे हम बनाएंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में अगर यहाँ पे जीरो है और एक्चुअल डेटा सेट के अंदर भी जीरो है, ये प्रिडिक्टेड भी जीरो है और डेटा सेट के अंदर भी जीरो, तो दैट बिकम्स ट्रू नेगेटिव, तो हम उसको ट्रू नेगेटिव कंसिडर करेंगे। यहाँ पे वन है और डेटा सेट में भी वन है, तो हम उसको बोलेंगे ट्रू पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव आया है, डेटा सेट में भी वो पॉजिटिव ही है। लेकिन यहाँ पे जीरो है लेकिन डेटा सेट में वन है, सो दैट मीन्स क्या आया है, फॉल्स नेगेटिव। कि एक्चुअली पॉजिटिव आना चाहिए था, वन आना चाहिए था, लेकिन जीरो आया, मतलब फॉल्स नेगेटिव। यहाँ पे वन है लेकिन डेटा सेट के अंदर मान के चलो जीरो है उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए या फिर उस पर्टिकुलर बंदे के लिए, तो ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव। एक्चुअली वो नेगेटिव आना चाहिए था, नॉट परचेस्ड आना चाहिए था, लेकिन आ चुका है परचेस्ड, तो ये फॉल्स नेगेटिव हो गया। तो ये इस तरह से हमें ट्रू पॉजिटिव फॉल्स, तो इसमें से हमें ये 52 आउट ऑफ दिस 80, 52 ट्रू पॉजिटिव है। वो डेटा सेट में भी पॉजिटिव है, डेटा सेट में भी उनका वैल्यू वन ही है, और जो प्रिडिक्ट किया है उसका वैल्यू भी वन है। 19 हमें ट्रू नेगेटिव मिला है, मतलब डेटा सेट में भी वो जीरो ही है और एक्चुअली हमें यहाँ पे भी प्रिडिक्शन के बाद भी जीरो ही मिला है, नॉट परचेस ही मिला है। 6 ऐसे है जो कि हम बोलेंगे फॉल्स निगेटिव है। ओके, फॉल्स निगेटिव मतलब डेटा सेट में परचेस्ड है लेकिन प्रिडिक्टेड उनके लिए है नॉट परचेस्ड। और ये जो 3 है वो है फॉल्स पॉजिटिव, डेटा सेट के अंदर उन्होंने परचेस नहीं किया है लेकिन प्रिडिक्शन करने के बाद हमें पता चला है कि दे हैव परचेस्ड, तो दिस इज फॉल्स पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंगली वी गेट different result, and from this we generate the confusion matrix. Okay, so I hope it is clear now. Any other doubts?